Hello everyone, welcome to Civic Sense. I am Dr. Madhukar Shyam. Today I am going to discuss with you about the theories of international relations. If you will understand the theories, it will help you in understanding the international relation in a comprehensive way. Merely knowing the facts will not help you or not develop much interest among you. But if you will read theories along with the facts, then it will give you a complete picture of international relations and the foreign policy of India, as well as it will also help you in understanding the other topics of comparative politics. So I will be covering the theories that are idealism, that are realism. Realism are also known as in modern times no neo-realism or the more advanced version of realism. Liberalism or more advanced version of liberalism is neo-liberalism. I will be discussing all these things: world system theory and functionalist theory, system theory. So these are the theories that I am going to discuss with you all in a very simple language so that you can able to understand. I am not going to use much bookish language, but there will be some of the statement which I have to, otherwise it will not give a complete picture. So मैं जहाँ पर भी ज़रूरत होगी उसको मैं यूज़ करूँगा कि ठीक है बुक से भी कुछ सेंटेंस को लेंगे, लेकिन बुक से वही स्टेटमेंट को लिया जाएगा जिससे बिल्कुल समझ में आए. ठीक है, तो समझते शुरू करते हैं इसको कि अब जो सिविक सेंस का जो मेन मोटो है कि आपको थ्योरीज से और आपको फैक्ट से और आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जोड़ा जाए, उसको उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है. हमने पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बुक रिव्यू और इवेंट ऑफ ग्रेट इवेंट्स के पहले की जो घटना हुई है उसके बारे में हमने जानकारी दी है. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड विद यू अबाउट द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इन आवर पॉडकास्ट. सो गो एंड वॉच ऑल दोज थिंग्स. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज गोइंग टू हेल्प यू in learning international relations and foreign policy in detail, along with the other topics of or subjects of political science. So let me start the theory with idealism. Today I am going to give you a brief understanding of idealism, and in the subsequent lecture, in the part 2, part 3, part 4, I will be discussing the realism and then world system theory. So all the theories that I will be discussing along with the examples where it will fit or where it is not going to fit. So idealism, most of you understand that. Are we supposed to follow idealism? Most of you are also reading in some of the books that Nehru era or the time frame was considered as idealistic time frame. So his policy was taken as an idealism. So what is idealism and what is the relevance of idealism? क्या हमें idealism को accept करना चाहिए, ignore करना चाहिए? किस वक्त किस आइडिया को किस तरीके से लेने की जरूरत है, उसको समझते हैं. कई लोग कहते हैं आइडियलिज्म को यूटोपिया. मोस्ट ऑफ यू कंसिडर और इट इज रिटन इन द बुक्स दैट आइडियलिज्म इज इक्विवेलेंट टू यूटोपिया. नो डाउट, फाइन. सो आइडियलिज्म, यूटोपिया क्या है? काल्पनिक बातें. जो बातें काल्पनिक अच्छी लग रही है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड. Right? So idealism is, we are talking about that it is not possible or it is not going to happen. अगर आप सोचिए कि कोई इंसान अगर ऐसा ही सोचा होता कि international system is anarchy, we all are aware of, keep this in your mind that international system is anarchy. So in this anarchical world, do you think that it is possible to have a world organization or international organization or regional organization? किसी ने कभी पास्ट में, अगर आप 1000 ईयर्स पहले जाएंगे तो लोगों को काल्पनिक लगेगा, ठीक है, कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है. नहीं, यहाँ के लोग बारबेरिक हैं या नहीं, ये वेल सेटल्ड लाइफ लोग नहीं जी पाते हैं, नहीं जी सकते हैं. तो एक माइंड सेट है कि नहीं, कुछ बातें जो है वो केवल आइडियलिस्टिक ही अच्छी लगती है. तो कुछ प्रोफेसर्स, फिलोसोफर्स, policy makers are also believe in this type of concept of idealism. Without being idealistic, you can't be realistic. This is what you need to understand. First you need to be idealistic, then also you will bring some innovative aspect on ground. कुछ भी चीज का आप पहले माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. आप सोचते हैं कि ठीक है, लेट इट बी. अब उदाहरण के तौर पे अगर हम ले
आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब वुडरो विल्सन ने इसको सजेस्ट किया अपने 14 पॉइंट में कि वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड लीग ऑफ नेशन, ठीक है, क्या बोला कि वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड लीग ऑफ नेशन। सो इन दिस लीग ऑफ नेशन, इस कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन को अगर उन्होंने सोचा कि नहीं ये ऐसा बनाते हैं ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने कल्पना की, उन्होंने बनाया, बट ड्यू टू सम रीजन अमेरिका वॉज नॉट इन्वॉल्व इन लीग ऑफ नेशन डायरेक्टली, फाइन, क्योंकि उन्होंने अपने कांग्रेस मेंबर को इसमें कन्विंस करने में उतने सक्षम नहीं हुए। तो क्या यह कहा जा सकता है कि क्या आइडियलिज्म में जो कल्पना किया गया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, राइट? रियलिस्ट विल से दैट ओके देयर आर द थिंग्स एंड these war are supposed to take place as Kenneth Waltz and other argue, fine. Next thing that we need to understand here is that ये जो काल्पनिक चीज थी, क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या वर्ल्ड वॉर थर्ड के बारे में भी सोचा जाना था? नहीं, यहां पर यूएस ने क्या किया, अपने आइडियलिस्टिक आइडिया को, वुडरो विल्सन के इस आइडिया को और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिसर्च करके उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस को नया शेप दिया, वर्ल्ड का एक नया ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर एक नया दिया, वो एक कल्पना ही थी, किसी एक जमाने में यह कल्पना ही थी, जो कि हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकता है और कोल्ड वॉर को रखता है। कोल्ड वॉर एक अलग सिचुएशन है, कोल्ड वॉर आपका है आइडियोलॉजिकल वॉर है, वो भी आप देखते हैं कि समय के साथ वो भी समाप्त हुआ। किसी ने सोचा था कि कोल्ड वॉर इस तरीके से समाप्त होगा जहां पे सोवियत यूनियन फॉल होगा और यूएसए जो है वो राइज करेगा? तो काल्पनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, आइडियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बट you need to be very careful while applying these policies in foreign policy and international relations. So idealistic people only create something new, they come out with some new policies, some new programs, so we should respect these idealistic people, but being over idealistic is sometimes is very much critical or sometimes creating some bad result. आप सोशलिज्म को भी जब पढ़ेंगे ना, तो रॉबर्ट ओवेन वगैरह जो सोशलिस्ट रहे हैं वो यूटोपियन से सोशलिस्ट कहलाते थे, कार्ल मार्क्स साइंटिफिक सोशलिस्ट कहलाते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का भी जो आइडिया था वो लास्ट स्टेज में वो एक यूटोपियन आइडिया था। तो यूटोपियन आइडिया या आइडियलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आपको एक नए संदर्भ, नए थॉट की ओर लेके जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप अगर गिवन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट और यू आर नॉट गोइंग टू बी इनोवेटिव, यू आर नॉट गोइंग टू मेक सम वर्ल्ड विच इज कंप्लीट पीसफुल, और what we say the concept of Ram Raj itself is utopian in nature, where एम के गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, जिनको हम भारत में काफ़ी फादर ऑफ नेशन के रूप से नाम से जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये काफ़ी एक पॉपुलर थीम लेके आते हैं, क्या है, राम राज्य का, जहाँ पे जस्टिस की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, लिबर्टी की बात होगी, और इसी तरीके से वर्ल्ड में वो पीस को प्रमोट करेंगे। आप जो आइडिया को लेके आते हैं कार्ल मार्क्स की, वर्ल्ड एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगा, ये सब एक यूटोपियन आइडिया है, ठीक है। यूटोपियन आइडिया होना गलत नहीं है, बट क्या है कि यूटोपियन आइडिया पे ही जीना फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप उनके साथ देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, वी शुड थिंक समथिंग एल्स। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल वी आर लिविंग और सराउंडिंग, हाउ मच दे आर गोइंग टू चेंज। सो आइडियलिस्टिक policies are important, but don't be over idealistic. This is what international relations suggest us. Therefore, what we see, idealistic policies fine that we have world organization, but we have world organization with P5, right? So what I am telling you about the idealistic policy, along with that the limitations of idealistic policy. Without being idealistic, no one will able to form any organizations like League of Nations, no one will able to form any organizations like what we say United Nations. Now in this contemporary period, what we need to see is eradicating
completely eradicating the nuclear weapon is an idealistic policy. Have we left the thinking, और हमने इसको छोड़ दिया क्या? हम अब ऐसा नहीं सोचते हैं क्या कि न्यूक्लियर को अबेंडन करना चाहिए? ठीक है, ये सोच खत्म नहीं होगी, right? Idealistic policy, or the peoples, those who believe in idealism, they say that we should have this kind of thinking, then only we will have more peaceful world. ठीक है, अदरवाइज अगर हम केवल दूसरे थॉट्स की ओर जाते हैं, जिसमें कि आइडियलिज्म की बात नहीं करके रियलिज्म की केवल बात करते हैं, तो जो कि हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियान कंट्री, वो न्यूक्लियर फ्री जोन नहीं हो पाता। वर्ल्ड में ऐसे कई सारे जोन बने हैं जो कि न्यूक्लियर फ्री जोन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर अगर हर जगह होगा तो लोग यूं ही जो है वो जी नहीं पाएंगे, एंड दे विल डाई ऑफ देयर रेडिएशंस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर्स, और हर जगह वर्ल्ड जो है वो तबाह हो जाएगी। सो आइडियलिज्म, बीइंग आइडियलिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल नॉट प्रोग्रेस, द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल नॉट प्रोग्रेस। What we need to understand here is that sometimes you think that the country like Pakistan will also become a peaceful country. Nothing wrong in thinking, having such thinking. Bringing that European Union, like European Union, African Union will also function in someday in that manner. Just in some of the questions that we deal in international relations, that we compare what we compare the European Union with that of ASEAN. What is the difference or similarity between ASEAN and European Union? Have we ever thought of that this country of Southeast Asia, which were colonized by the European country, will be able to get compared by the scholars or the policy makers? एक कल्पना ही थी ना। तो लेकिन इस रीजन को डेवलप किया गया, और आज़ादी के बाद ये कंट्री जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किए, अपने कम्युनिटी फीलिंग को स्ट्रांग किए, और वो एक जियोग्राफिकली अपार्ट होने के बाद भी, समुद्र से एक दूसरे से दूर होने के बाद भी, एक आसियान एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं। फाइन। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट आइडियलिज्म इज नॉट रॉन्ग, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बीइंग ओवर आइडियलिस्टिक इज रॉन्ग। सो because of idealism we have League of Nation, we have United Nations, the UN, right? So we have SCO, we have BRICS. If we have thought of कि चाइना हमारा कंप्लीट एनिमी है, राइट? अगर चाइना हमारा कंप्लीट एनिमी है तो फिर हम चाइना के साथ क्यों SCO में साथ में हैं, वह क्यों चाइना के साथ हम ब्रिक्स में हैं? तो देयर आर सम पॉलिसीज और पॉसिबिलिटीज दैट we will also learn something from China. China is economic power, so let's not ignore such facts. और एक दिन ऐसा होगा कि इंडिया राइज करेगा, right? This is the thought we are having, our government is having, and the people of India is having. Why we are having? अभी तो हमारे पास नहीं है, हमारी इकोनॉमी हम बहुत कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं अभी, चाइना से भी, यूएस से भी। बट what is the thinking that we are having, that we are going to progress in such and such way, so we need to take help and support from the other countries also. We are open to get or have support so that we can fulfill our own national interest. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी मेकर में ऐसा बैठ जाए कि जो कि यह कहे कि नहीं, चाइना हमारा एनिमी है, so we are not going to have any relation with China. It will be difficult, it will not be very much possible for India as well as for China, because there are limitations, we are sharing borders, right? बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम बहुत टॉप पे लेके चले गए और दूसरे सभी को छोड़ दिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना इज अ कंट्री विच इज हैविंग व्हाट वी से द चिप और अदर प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स से वी आर मेकिंग वीडियोज और वी आर सर्वाइविंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना। इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा अगर हम टेक्नोलॉजिकली उसको डिस्टेंस में रख दें या सब कुछ छोड़ दें चाइना से। तो हम ये देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में डिले किए हैं, राइट? सो वी नीड टू हैव good thinking, we need to have positive thinking. This is what message is given by idealistic scholars, right? So I'm not saying to be over idealistic, but be idealistic. In the next part I will be discussing with you that
The idealism have two understanding, that is the narrow understanding of idealism and the broader understanding of idealism. What are the narrow understanding and what are the broader understanding? Let me see one by one. The broader understanding see idealism as a doctrine or disposition towards the world affair, which can be witnessed in all historical periods where independent political communities exist in a condition of anarchy in the absence of central government. Idealism is an optimistic doctrine which seeks to transcend international anarchy and create more cosmopolitan and harmonious world order. So this is what message that the broader understanding of idealistic thinkers are giving to us. And in order to make harmonious world, we need to have the the understanding of the broader understanding of idealism. Now next part is that narrow understanding of idealism see that intimately tied with the interwar period of 1919 to 1939, right? This was the time of 1939 between between World War First and World War Second. So narrow understanding, those who have narrow understanding of idealism or idealistic theory, they will say that it is a doctrine that dominated the first phase of IR, theorizing, emphasizing, and the growing interdependence and unity of mankind, and bound up with the experiment of internationalism that was League of Nations. It received attack from E.H. Carr, one of the historian who also tried to define the international relations in more detailed way. So read E.H. Carr's book 20 Years of Crisis, that is going to help you in understanding international relations. There is no agreed definition of idealism, I would like to highlight here. Indeed, the term is often employed in a rhetorical way, particularly by realistic thinker in order to discredit or radical reformist idea they dislike. Idealism is talking about something called internationalism. Idealism is something talking about was cosmopolitan. Cosmopolitan means to say that we are a citizen of the world, right? We are not only limiting ourselves to this boundary. Now you see the notion of cosmopolitan as implied in the part of cosmopolitanism is applied in the European Union. Number of countries, they have given up their visas or they have opened the visa system for the members who are coming to the another country through European Union. So this is one of the revolution. This is the new idea which other school of thought are not ready to accept. They are ready to deal or live with a narrow understanding of idealism. Fine. Idealism, we are talking about how liberal or neoliberal policy narrowed down the concept or the big politics of boundary, right? Now we are talking about that boundary is fine, but interdependence with one another is creating more comprehensive and more engagement with the people and reducing the threat of war. So these are the basic things that I need to tell you related to this idealistic policy. Idealism believes in the reason or power of reason. Idealism believes in power of reason. I hope it is visible to all of you. It is reason. Okay, so we need to understand that the rationality is very necessary, very important to study this concept of idealistic policy. So in the next part,
I will be discussing with you all about the theory or concept of realism, or the six school or six principles of Hans Morgenthau. So it will be very interesting. So let's meet in the part 2 of the theory of international relations. Thank you.